we have studied that, अच्छा फ्रूट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रूट? बताओगे? In previous classes we all have studied that fruit is the ripened ovary which develop after the fertilization. In a very short we can say that fruit is the ripened ovary which develop after the fertilization. आप लिख सकते हो, it is the ripened ovary develops after fertilization. Develop after fertilization. And if you will see the fruit of a plant, then fruit is the characteristics feature of flowering plant. If there is any flowering plant, then it will result in the formation of fruit, and it develops after the fertilization. And if it is formed without fertilization, there are many plants in which there is the formation of fruit without the fertilization, then it is called as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. सच टाइप ऑफ फ्रूट, अभी हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे. सच टाइप ऑफ फ्रूट which develop without the fertilization, then it is called as parthenocarpic fruit. And very simple condition in which we can see that there is a formation of fruit without the fertilization means parthenocarpic condition can be seen in case of banana. Very easily you can see that without fertilization there is the formation of fruit. And such type of condition, यदि वर्ड आ जाए कि पार्थेनोकार्पिक क्या है, what are the parthenocarpic fruit, means such type of fruit which develop without fertilization. Such type of fruit which develop without fertilization, and those fruit which develop without fertilization is called as parthenocarpic fruit, which can be seen in case of banana. In case of banana, the parthenocarpic condition can be seen very easily. Whereas there are many fruit which is considered as a true fruit. It means those fruit in which there is presence of ripened ovary. True fruits are those fruits in which there is development or presence of ripened ovary. It is also called as eucarp. It is also called as eucarp. As we have studied that U means true. U bacteria आपको याद होगा. U bacteria हम लोग पढ़े. This U means true. Eucarp means such type of fruit which is also called as a true fruit. It is also called as true fruits. And very simple, we can say that a fruit which develop from the ovary, a fruit which is developed from the ovary of plant, that is called as eucarp, or it is also called as true fruits. Such type of fruits which develop only from the ovary of the plant, then it is called as eucarp or true fruits. But in different conditions, suppose that if any part of flower other than the ovary, any part of flower other than the ovary is from the edible parts of fruit. In that condition, when the other part of flower except the ovary form the edible part of fruit, then such type of fruits are called as false fruit. Such type of fruits are called as false fruit, or it is also called as pseudocarp. It is also called as pseudocarp.
It should be mentioned pseudocarp means false fruit. False fruit. Very easily, you can say that such type of fruit in which there is presence of the edible part which develop from the other part of flower except the ovary, then it is called as pseudocarp, or such type of fruits are called as false fruit. And as we have studied that the wall of true fruit is called as pericarp. Yesterday we हम लोग discuss किए थे कि the wall of true fruits are called as pericarp, and it is divided into three parts. There is division of the pericarp region of the fruit into three parts, which is called as outer, middle, and inner. The outer part is called as epicarp, as it is outer. In case of outer condition, it is called as epicarp. The middle one is called as mesocarp, whereas the innermost part of fruit is called as endocarp. There are three parts in the pericarp region of the fruit, that is called as epicarp, mesocarp, and endocarp. We should be mention it also that there is presence of pericarp. The first one is outer condition, means epicarp, mesocarp, and endocarp. There are different type of fruits of which we used to eat the different parts of plant, like epicarp, mesocarp, and endocarp. So the fruit, and you have seen, you are very familiar with some fruits like the mango, like the coconut also. In case of mango and coconut, they are conditioned as the drupe. It is also given in your book also that these mango and coconut fruit are considered as the drupe. The reason is that there is presence of a stony structure inside it. There is presence of stony structure, due to which these drupe fruits are also called as stone fruit. Because if you will see the mango or coconut, then we will find that there is presence of stony structure inside it, due to which it is also called as the stone fruit. These drupe fruits are called as stone fruits, and these fruits develop from the monocarpellary superior ovary. It is developed from monocarpellary superior ovary. You understood about the monocarpellary condition and superior ovary, then these drupe fruits are developed from the monocarpellary superior ovary, and there is presence of a single seed inside the fruit. In case of mango, we used to eat the mesocarp region of the fruit. इन केस ऑफ मैंगो, यदि आप आम को देख लो तो आम के जिस हिस्से को हम खाते हैं वो मीजोकार्प हिस्सा, ऊपर के छिलके को हम हटा देते हैं, एपीकार्प होता है. मीजोकार्प जो पल्प वाला हिस्सा होता है, डेट इज कॉल्ड एज मीजोकार्प, व्हिच इज द ईजिबल पार्ट ऑफ मैंगो, वेयर एज द इंडोकार्प इज हार्ड स्टोनी स्ट्रक्चर इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीड. जिसको हम गुठली कहते हैं, उस गुठली को हम देखते हैं तो वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है. दैट इज द इंडोकार्प part of the mango fruit. But in case of coconut, when we will see, then there is presence of epicarp region. The mesocarp region is not edible, whereas the edible part of coconut is endocarp. Means we can say that we use the mesocarp and endocarp region of the fruits. In case of mango and coconut,
there is drupe condition because there is presence of a stony structure due to which it is also called as stone fruit. And the mesocarp in case of कोकोनट इज फाइबरस. आप देखते हो जब उसके छिलके को हटाते हो तो फाइबर की तरह संरचना दिखती है, जब उसको हम हटा देते हैं तब स्टोनी स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर व्हाइट सब्सटेंस होता है. दैट इज द इंडोकार्पिजन एंड दैट इंडोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. सो अलग अलग फ्रूट में हम किसी फ्रूट में मेसोकार्प को खाते हैं, किसी फ्रूट में हम इंडोकार्प को खाते हैं. एंड इट कैन बी सीन वेरी इजिली इन केस ऑफ कोकोनट because we eat the endocarp region of coconut. And there, आप उसे भी नोट कर लो, there is drupe condition. Drupe, or they are also called as stone fruit. It is also called as stone fruit. Now we should have to study about one different type of fruit that is called as palm. हाँ बेटा बोलो. सर एप्पल में तो हम एपिकार्प और मेसोकार्प दोनों को अभी हम बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं. वी हैव टू स्टडी अबाउट द palm. Such type of fruit in which we used to eat the एपीकार्प एंड मेसोकार्प. अब इसमें एक्चुअली हम कहें तो इसमें एपीकार्प और मेसोकार्प रीजन नहीं होता है बिकॉज होल पार्ट्स आर ईटेन. एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट इन विच we like to eat the most of the part of fruit is called as palm, and it can be seen in case of apple. If you will see about the apple, then there is presence of seeds in the center of the fruit. Whenever you cut the apple, you will find that there is presence of, आज बहुत जल्दी टाइमिंग खत्म हो गई. There is presence of seeds in different chamber. Means there is, तो यदि मान लो बहुत सारे चेंबर है तो किस तरह की सिचुएशन हुई होगी उसमें. यदि प्रेजेंटेशन को हम पढ़ें, प्रेजेंटेशन कैन बी सीन वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड्स इनसाइड द फ्रूट. तो यदि आप एप्पल को ट्रांसफर सेक्शन काटते हो, इफ एप्पल इज कट from the transfer section, then you will see very easily the condition of seeds lies in the central position of the fruit. तो there is multi chamber condition. क्या होगा, बहुत सारे चेंबर होते हैं और उस चेंबर में सीड्स प्रेजेंट होते हैं. तो such type of fruits it can be seen in case of apple or in case of pear also. नाशपाती जो एक आती है, देखे हो, एप्पल की तरह, एप्पल्स की तरह कह लें या अमरूद की तरह आप देखे हो नाशपाती आता है. उस सिचुएशन दे आर कंसीडर एज द palm because we use to eat most of the part of fruit. ये सकुलेंट फ्रूट होते हैं. अब क्या सकुलेंट होता है उसको आप पढ़े नहीं हो तो इसलिए सिर्फ हम इतना जाने. वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट लाइक द ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अबाउट द सीडोकार्प, अबाउट ड्रूप एंड palm also. We have studied about the different types of fruit. Now we have to discuss about the seeds. सर हाँ बेटा. सर ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का एक एक एग्जांपल बता दीजिए. बेटा ट्रू फ्रूट में हम लोग पढ़े कि इन केस ऑफ ट्रू फ्रूट्स, दोज फ्रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम द ओवरी, वो सारे फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हो उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कह देते हैं. ठीक है. एंड द वर्ड स्यूडो लगा है, इसका मतलब कि वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है जिनका डेवलपमेंट किसी दूसरे पार्ट से हो गया, जिसके हम किसी दूसरे फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट को हम खा रहे हैं. ट्रू फ्रूट्स की कंडीशन में आप बहुत सारे फ्रूट को देख सकते हो. जैसे हम लोग पाम को पढ़े हैं तो पाम भी क्या है, वो राइपन ओवरी से ही डेवलप होता है, तो वो ट्रू फ्रूट की कंडीशन में आता है. हाँ, अब उसके पूरे भाग को हम खा रहे थे इसलिए वो क्या हो गया, पाम की कंडीशन में आ गया. यदि हम इसको बांटते हैं तो कई हिस्से में बंट जाता है. हम बहुत शार्ट में उसको डिस्कस किए हैं. ठीक है. बिकॉज इन योर एनसीईआरटी इट इज गिवन इन ब्रीफ. डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है. ठीक है. उसमें सकुलेंट फ्रूट होते हैं. लेट अस सी नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द
seed, as we have studied that when there is fertilization, after fertilization, the ovules develop into the seeds. The ovules develop into the seeds after the fertilization, and there is two covering of the seeds, the outer covering and inner covering. The outer covering of the seeds is called as testa, whereas the inner covering of seed is called as tegmina or tegmen also. If we discuss about the seed, then we can say that ovules develop into the seeds after fertilization. After fertilization, and when we see the covering of seeds, then there is two covering. The first are outer covering and inner covering. It cannot be distinguished very easily, but there is presence of two covering. This outer covering of seed is called as testa. Testa, whereas the inner covering is called as tegmen or tegmina also. There is two covering, and these two covering cannot be distinguished very easily, but there is presence of two covering. The outer is called as testa, whereas the inner one is called as tegmina. And when you will see the seeds, when it is attached with the ovary wall, in that condition there is presence of a फ्यूनिकुलस. देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूनिकुलस. इस वर्ड को आप नोट कर लो, फ्यूनिकुलस. कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही सीड ओवरी की वाल से अटैच होता है तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप करता है. उस छोटे से स्ट्रक्चर को जिससे सीड ओवरी की वाल से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस. एंड व्हेन we remove the seed from the covering of seed, in that condition we can see that there is presence of a scare like structure on the seeds. और बड़े आसानी से आप चने में, मटर में, तिलहन में देख सकते हो कि जब हम सीड को रिलीज करते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्केयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. दैट स्मॉल स्केयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हीलस. दैट इज कॉल्ड एज हीलस, which is the scare like structure through which the seed is attached to the wall of ovary. तो वह जो wall ओवरी के wall से अटैच होता है छोटा सा स्ट्रक्चर, उसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं. and when we remove the seed, in that condition the scare like structure which is seen or which is present in the seed is called as hilus. Is called as हीलस. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हीलस, या इसे हीलम भी हम कहते हैं. आपकी बुक में हीलम दिया हुआ है, हीलम आप नोट कर लो. इट इज कॉल्ड एज हीलम. आपको याद होगा व्हेन यू विल स्टडी इन क्लास 10th अबाउट किडनी, यू ऑल हैव स्टडी. किडनी को पढ़े थे, जहां से किडनी के यूरेटर डेवलप होते थे, जहां पर आर्टरीज उसमें इंटर करते थे, वहां पर भी स्केयर लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था. याद है आपको? Have you remembered the things which you have studied in excretory system of the human beings in class 10th? उस वक्त भी आप हीलस को पढ़े थे. किडनी का वो स्ट्रक्चर जहां से यूरेटर डेवलप करता है, यूरेटर निकलता है, या जहां पर आर्टरीज और वेंस जुड़ी होती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? हीलस कहते हैं. बट इन केस ऑफ सीड्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्केयर लाइक स्ट्रक्चर,
and that scare-like structure is called as hilum, which is the representative part of funiculus, and at or near the hilum there is presence of a very small pore-like structure through which the water enter very easily and the seeds develop into the new plants. When we sow the seeds in the ground, at that time there is requirement of water. That water is absorbed through a small pore-like structure in the seeds, which is called as micropyle. Which is called as micropyle. One figure is given in your book. You can see a seed of gram is given. Such type of condition is developed. इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहां पर हम देखेंगे ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है. यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा. ये तो कॉटलडन होगा, इसकी कवरिंग हो जाएगी, ऊपर से ये अटैच ऐसे होगा. ये इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी. यू विल सी सच टाइप ऑफ कंडीशन. तो यहां ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, द स्ट्रक्चर विच इज सीन हेयर, इट इज द हीलम. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हीलम, and above this portion there is presence of a small pore like structure. आपको देखने के लिए मिल जाएगा. आप चने के बीज को आज भिगो दो और कल उस भीगे हुए चने को जब आप दबाते हो तो उसमें से पानी निकलता है. पानी जिस जगह से निकल रहा है, दैट इज द माइक्रोपाइल पोर्शन ऑफ द सीड. वो पोर्शन ही क्या है? माइक्रोपाइल है, जहां से वाटर रिलीज होला. मीन्स दिस माइक्रोपाइल पोर्शन इज हेल्पफुल टू enter the water in the seeds, or water enter through these pore like structure, that is called as micropyle in the seeds. We have